Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying your online classes also, children. So, as you all are knowing it that yesterday we have completed or last week we have completed a unit 1, and yesterday we have started our next unit, that is unit 2, things around me. So in that unit, yesterday we have done our page number 11, that is people who help us. We have studied about community helpers and we have seen few things and we have guessed with the clues about 6 community helpers. So children, in that row only today we are going to start a new page of unit 2, that is things around me. Now today we will do, before I start that page number, I want to ask from you all that why we should eat fruits and vegetables. Because they help us to become healthy and they keep our body healthier by providing different nutrients. So children, as I told you earlier also, nutrients means what? Nutrients means the thing which is required by our body, and those things we get it from fruits, vegetable and other food item. For example, a plant need water to grow. So that plant, for plant, water will be the nutrient, and the other mineral which is required by that plant, they are taking that from soil. Fine. सॉइल मतलब मिट्टी, जिस मिट्टी में वो पौधे को लगाते हैं, पौधे को जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए दैट दे आर टेकिंग फ्रॉम सॉइल, एज वेल एज अगर आपका कोई प्लांट है, आप उसको देखिएगा, इफ यू विल नॉट वाटरिंग दैट प्लांट प्रॉपरली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा. सो व्हाट डज इट मीन दैट प्लांट रिक्वायर वाटर. प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए. किस लिए, ग्रोथ करने के लिए. जस्ट लाइक दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड. अभी हम एक बारी फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट किया बट यू हैवंट गेट योर लंच ऑन टाइम, तो क्या लगता है, ओ गॉड मेरी तो पूरी एनर्जी डाउन हो गई है, अरे मैं काम कैसे करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं थक गया हूँ. क्यों थक गए हो आप, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है. एनर्जी क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है प्रॉपरली, है ना. तो एनर्जी डाउन होने का मतलब योर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से लेगी, फूड आइटम से, जो आप खाना खाओगे, है ना, वहाँ से एनर्जी लेगी. अब एनर्जी मीन्स व्हाट, एनर्जी के अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए. अच्छा ठीक है बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर द एडवर्टीजमेंट, उसमें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेन वाला जो एडवर्टीजमेंट आता है या बॉर्नवीटा वाला जो एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें क्या होता है, डॉक्टर इज शोइंग कि दैट कॉम्प्लेन और बॉर्नवीटा इज कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ये वाइटामिन, मिनरल, ए बी सी डी, ये वो, है ना, दिखाते हैं ना कि ऐसे गोल गोल करके उसके अंदर जा रहे हैं. व्हाट इज दैट, मीन्स दैट ऑल मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए विच कम्स टुगेदर इन दैट मिल्क प्रोडक्ट और इन दैट कॉम्प्लेन और इन बॉर्नवीटा और वॉट एवर यू ड्रिंक. तो वो चीज़ उसके अंदर आती है. जस्ट लाइक दैट, अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम बात करें, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट एवरी डे अ हेल्दी पर्सन must
eat 5 vegetables and 2 fruits. Fine. That I have told you earlier also कि एक healthy person को to become healthy always you must eat 5 vegetable every day and 2 fruits every day. Fine. So that is the thing which required by everybody. Okay children. So now today we will study about some of the healthy eats. Fine. Because as I told you how fruits and vegetables are important, we are getting different nutrients from different fruits and vegetables, and how they work for your body, that also we will see in today's lesson. So children, let's start our page number 15, that is healthy eats. Healthy eats. Page number 15 in your book. Page number 15, that is healthy eats. Now what do you mean by healthy? Healthy हम किसको बोलते हैं? Healthy means जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा, दैट इज हेल्दी. ईट्स मतलब खाने वाली चीज़ें, ठीक है. हेल्दी ईट्स मतलब द गुड थिंग विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेल्दी ईट्स. हेल्दी ईट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन इन योर बुक ऑन दिस पेज नंबर 15, that write the names of the vegetable below each picture. Now you have been given with a picture, and in that picture, just below that picture, you have to write name of that vegetable. So now the first picture is of what? First picture is of what? Now here the first picture is of, first I write the question, write the names of the vegetable below the picture. Fine. So first picture is of pumpkin. Pumpkin. So first picture is of pumpkin. Now how pumpkin is important for you all? Pumpkin कैसे important है आपके लिए? So let's see how pumpkin is important for you all. So in pumpkin is a fibrous vegetable. Now what is fibrous? If you have seen pumpkin inside, अगर आपने pumpkin को ऐसे कट की, मम्मी को कट करते हुए अगर अंदर से आपने देखा होगा, you will find fine hairs inside the pumpkin. Pumpkin के अंदर ऐसे छोटे छोटे रेशे आपने देखे होंगे, threads देखे होंगे. So that's why pumpkin is called fibrous vegetable. Fibrous vegetable होती है and that is very good for your digestive system. आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए you required fibrous thing जो आपकी बॉडी के डाइजेशन को अच्छा रखते हैं. So pumpkin is one of that vegetable which help our body to digest the food. अगर आप pumpkin की vegetable खाते हो, it will get digested by your body easily. बॉडी को बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता है for that digestion because that is a fibrous vegetable as well as उसमें water content भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर water भी. अब देखो water content what is that, कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं जिनके अंदर पानी पहले से ही प्रेजेंट होता है, सो दैट जब भी मम्मी बनाती है तो क्या होता है, उसमें पानी, कढ़ाई में बहुत सारा पानी आ जाता है. सो वो दैट सिंबलाइज द वाटर कंटेंट इन द वेजिटेबल. तो अभी पंपकिन के अंदर, पंपकिन इज अ फाइबरस वेजिटेबल. फाइबरस वेजिटेबल, गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर आईज. फाइन. Good for eyes, good for digestive system, and one of the fibrous vegetable which is very good for your body. तो अभी हमने pumpkin के बारे में क्या क्या किया. Pumpkin is a fibrous vegetable. First what we have done, fibrous
vegetable, good for digestion, good for digestion or digestive system. Number 3, what we have done. Now what is digestive system means आपकी बॉडी में जो आपका खाना जब आपकी बॉडी में जाता है तो हाउ इट विल गेट डाइजेस्टेड, वो कैसे डाइजेस्टेड होता है आपकी बॉडी में. डिफरेंट ऑर्गन्स वर देयर विच हेल्प. तो दैट इज गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गुड फॉर आईज, गुड फॉर आईज. और यू कैन रिमेंबर दिस, गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो. फाइन, दैट इज गुड फॉर डाइजेशन. डाइजेशन मतलब खाने को हजम करने में वो हेल्प करता है, खाने को हजम करने में वो हेल्प करता है. सो दैट इज गुड फॉर डाइजेशन. ठीक है. और जब भी आप ये पंपकिन का वेजिटेबल खाएंगे दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल बाय योर बॉडी. वो बॉडी आपकी बड़ी इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेती है. इट डजंट टेक मच मोर टाइम टू डाइजेस्ट इट. सो children, I hope that whatever quality pumpkin is having, that is clear to you all. You watch my video. If you have any doubt, we will discuss in a online class. First of all, fibrous vegetable. आपने pumpkin को अंदर से देखा होगा, उसके अंदर ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड से होते हैं. That is what fiber. And good for digestion. बॉडी के डाइजेशन के लिए आप जब भी पंपकिन खाएंगे दैट विल बी इजीली डाइजेस्टेबल बाय योर बॉडी. नेक्स्ट, दैट इज गुड फॉर योर आईज. फाइन. नाउ कम टू अ सेकेंड वेजिटेबल. द पिक्चर विच इज गिवन इन योर बुक दैट इज ऑफ नंबर 2, दैट इज ऑफ लेडी फिंगर. लेडी फिंगर. Now most of the children like this vegetable. Lady finger is liked by most of the children. अभी lady finger का what are the qualities in lady finger? First of all, sticky one is there. Stickness होती है उसके अंदर, sticky सी होती है उसके अंदर जो that fluid which is there inside the lady finger. Again this vegetable is very good for your digestion because that liquid which lady finger is containing that helps to digest the food inside your intestine, inside your stomach. Fine. So lady finger is also one of the fibrous vegetable and it is very easy to digested by your body. Number 3, it is good for your stomach as well as for your intestine. Number 4, it is also good for your eyes. That's why we are saying that green vegetables are very good for your eyes. Fine. So these are the few qualities of lady finger. Again, good for your digestive system or good for stomach. And then next, that is good for eyes. And that fibrous fluid it has that will help to clean your stomach, clean your intestine. So that lady finger is also an important green vegetable. So you all must eat lady finger. So these are the few important qualities of lady finger. So now we'll come to next which is very important, that is spinach. Number 3 is very important, that is spinach. Now why spinach is very important? Because spinach is rich in iron. Now what is that iron is required? And rich in iron and good to increase your hemoglobin. Now we'll understand what is it, this hemoglobin, or you will remember this HB.
Now what is that hemoglobin? We will not go beyond your range. Hemoglobin क्या होता है? Means that will help to make good to increase blood. Fine. Blood to you all must understand कि blood help to increase blood in your body. Blood in your body. And amount of blood. What is the amount of blood in our body is symbolized by hemoglobin. Fine. First of all, आपको spinach is a green leafy vegetable that you all are aware of it. Spinach को हिंदी में क्या बोलते हैं? पालक. और पालक हम में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होती, बट स्टिल स्पिनच इज रिच इन आयरन एंड सो मेनी अदर मिनरल. स्पिनच इज रिच इन आयरन. अब आयरन इसमें रिच होता है एंड दैट इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड. ब्लड आपको बॉडी में ब्लड इंक्रीज करना है. इफ यू हैव लेस ब्लड इन योर बॉडी, अगर आपका HB जो समटाइम यू हैव हर्ड ऑल्सो, मेरी बॉडी में HB डाउन है. HB डाउन मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन. एक हेल्दी पर्सन को जितना HB या ब्लड रिक्वायर्ड है दैट इज नॉट देयर इन द बॉडी. तो क्या करेगा वो स्पिनच खाएगा. ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर आईज ऑल्सो. ठीक है. अभी आपको इनफैक्ट अगर आपकी ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या वाइट ब्लड सेल्स कम है आपकी बॉडी में, देन ऑल्सो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में डिशुम डिशुम करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? डिशुम डिशुम, यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ठीक है. नाउ अ डेज अभी कोरोना वायरस में क्या हो रहा है? टू इंक्रीज आर इम्यूनिटी. अब हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से. तो स्पिनच में ये सारा कुछ है. स्पिनच इज रिच इन आयरन, गुड टू इंक्रीज ब्लड इन योर बॉडी एंड गुड टू रिच योर इम्यूनिटी और इम्यून पावर. So what we have done in healthy eats, we have done 3 vegetable, that is pumpkin, ladyfinger and very important, that is spinach. Now what is pumpkin? Pumpkin is one of the vegetable which is a fibrous vegetable. I have written here, which is very good for digestion because that fibrous thing will help to digest by our body easily. Third, that is good for your eyes. Second is ladyfinger, again that is very good for your stomach, good for your eyes again. Ladyfinger contain that fluid, वो sticky जो fluid होता है, that will help our body to digest it easily. Now we'll come to the third, that is spinach. Now spinach is rich in iron. When our body is deficient in iron, then doctors advise to eat spinach more. Abhi spinach ka will eat vegetable also, we can eat soup also, we can use spinach in paratha and other dishes also. More often you have heard about palak paneer, that is one of the recipe of the spinach only. Spinach paratha also you have heard. So that all things, that green leafy vegetable is very good for your body. So other thing is that is good to increase blood in your body. Last but not the least, spinach is very good for your immunity. If you have to increase your immune power, आपको वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? डिशुम करते हैं. तो वो डिशुम करना है, वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना है, देन यू आर सपोज टू ईट स्पिनच. तब आप क्या खाएंगे? पालक खाएंगे. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट हेल्दी ईट्स के ऊपर आगे जाएंगे. मैच द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स with their pictures. So we'll come to the next part of this page. So now next part of the same page is match the names of the fruits with their pictures. Match the names of the fruits with their picture. Now this matching you can do it yourself because you all are aware about the picture of different fruits, and this matching you can easily do.
Now, right now, children, we will discuss what are the different features or different good things about our healthy eats, that is your fruits. Now, we'll come to our fruits one. I will come to our fruit category. Now, in fruits, the first picture is given of orange. Now, the first picture is of orange. Now, children, orange is a citrus fruit. Citrus fruit means it is a juicy fruit. Fine. इसको हम citrus juice, citrus fruit क्यों बोलते हैं? Citrus fruit because it contains juicy liquid which is थोड़ा सा खट्टा भी होता है. Fine. Citrus fruit and it is rich in vitamin C. It is rich in now vitamin C, rich in minerals you can write, or rich in vitamin C only you can write. Fine. Vitamin C is again a nutrient which is required by our body. So we'll write here vitamin C. So we will understand only this much. Orange is a citrus fruit and it is very good for your gums. जो टीथ के आसपास जो गम्स होते हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है. क्यों होता है? बिकॉज इट विल प्रोवाइड वाइटामिन सी. अब वाइटामिन सी क्या करता है? वो गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है सो दैट इट कैन होल्ड द टीथ प्रॉपरली. अगर आपकी गम्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, अगर गम्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो क्या आपके टीथ अच्छे से लगे रहेंगे? आपके नहीं, फिर टीथ हिलने लग जाएंगे बिकॉज गम्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर. सो दिस ऑरेंज इज वेरी गुड फॉर गम्स. फाइन. अगर गम्स हेल्दी होंगी तो अपने आप ही टीथ विल बिकम healthy. Fine. Now we'll come to our second fruit, that is pear. Again pear is also a citrus fruit. तो ये सारी qualities तो उसमें आई गई. citrus fruit हो गया, rich in vitamin C हो गया, very good for gums. Along with that gums, it is very good for your digestion. It is very good for digestion. ये सारी क्वालिटीज तो उसके अंदर भी आ गई, ये वाली. बट उसके साथ साथ दिस पियर इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन. एंड दीज बोथ आर फाइब्रस फ्रूट. जितने भी फ्रूट होते हैं दे आर क्वाइट फाइब्रस. ऑरेंज का भी देखो ऊपर कितना सारा होता है ना, हम उसको छीलते हैं एंड देन अंदर से जो उसका पीसेस खाते हैं, दैट ऑल्सो बिकम अ फाइब्रस. फाइन. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट फ्रूट, दैट इज पाइनएप्पल. Now pineapple again citrus fruit है. Pineapple again it is a citrus fruit rich in vitamin C and other minerals also. Nutrients ढेर सारे होते हैं इसके अंदर, good for digestion also. Next thing is pineapple is very good for your eyes also and other minerals also you are getting from pineapple. तो अभी पाइनएप्पल इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो. इसमें शुगर कंटेंट भी होता है. शुगर, इफ यू आर योर बॉडी इज गोइंग लेस इन शुगर कंटेंट, देन यू कैन ईट पाइनएप्पल एंड दैट इज गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द डॉक्टर टू ईट पाइनएप्पल. दैट इज गुड फॉर digestion and gums both. Digestion and gums both. Fine. Now we'll come to our fourth fruit, orange. We have done orange, pear and pineapple. Now we'll have our fourth fruit, that is mango. मैंगो को हम क्या कहते हैं? मैंगो को हम फलों का राजा भी बोलते हैं. मैंगो को हम फलों का राजा भी बोलते हैं. वी हैव
different variety of mangoes which are present in our country. Mangoes की more than 100 से भी ज़्यादा species of mango. That's why mango is called king of fruits. ठीक है, तो मैंगो को हम मैंगो की वी हैव मोर देन 100 varieties of mango were there in our country. So और मैंगो के what are the health benefit of mango? Again mango is also good for digestion, but if you will eat more amount of mango then it will not good for your body. So we must eat a limited amount of mango. Fine. So now we'll next to tidbits. Mango का now what is the feature of mango for your body? So mango, if you are eating it in limited quantity, again it is good for digestion as well as it will increase immune power. Immune power means that benefit that strong. It will make our body strong. In fact, all the fruits will make your body strong. सारे fruit आपकी body को क्या करते हैं? Strong बनाते हैं. ठीक है? That's why we must eat fruits and vegetable every day. Now, in your book, one tidbit is given on this page number only. Page number 15 only. One tidbit is given. I'll read out that tidbit for you all. You just understand it. This thing I have told you earlier also. Now, what is there? Did you know that tomato is actually a fruit and not a vegetable? That I have told you earlier also, that tomato is a fruit but not a vegetable, because tomatoes are formed by flower and it contains seeds also, which is a specification for fruits. Fruits are formed by flowers and containing seeds also. So this tomato comes in the category of fruits. Now we'll come to next some other fruits that are popularly used as vegetables are not only tomato. There are few more fruits which are used as vegetable. These are capsicum, cucumber and green beans. Now capsicum, cucumber and green beans, all these three comes in the category of vegetable, but actually they are not vegetable, they are fruit. Just like tomato. Tomato to be considered as fruit only. But apart from tomato, we have cucumber, capsicum and green beans also, which comes in the category of vegetable, but actually they are fruit. Fine. So remember this. What are these? Cucumber, capsicum and green beans. Cucumber, capsicum and green beans. Cucumber, capsicum and green beans. So these three comes in the category of vegetable, but actually they are not vegetable, they are fruit, just like tomato. So tomato though we generally considered as vegetable, but tomato is a fruit because it grows from flowers. So what we have done here, children? We have done about 3 vegetable, that is pumpkin, ladyfinger and spinach in this video, and we have seen the different feature of these 3 vegetable. After that we have started our fruits and we have done orange, pear, pineapple and mango in this video. Orange, pear, pineapple and mango. And we have seen that orange is a citrus fruit, as well as all the fruits are citrus because some some amount of juice they contain. So citrus fruit, orange is considered as citrus fruit just like lemon, and that is rich in vitamin C, which is very good for our gums. In fact,
for our hair also, and that is very good for our gums also, because vitamin C is very important for our gums. So we have done about these fruits, and all these comes in the category of healthy eats. I hope you have enjoyed today's class. So that's all for today, children. Meet you in our online class. So till then, good day.